डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों ऑफ एंटायर यूनिवर्स, इट्स नॉट restricted to one place, it is not restricted to one country, it is not restricted to one religion, it is not restricted to any one caste or one community or one religion or one place, one country, one continent. Nice, thank you. Yes. So आज భగవద్గీత के इस प्रवाह में ఈ భగవద్గీత అనేటువంటి ప్రవాహంలో వెల్కమ్ టు ద జర్నీ ఆఫ్ భగవద్గీత. భగవద్గీత యొక్క సుమధుర రసవత్తర ప్రవాహం, ద జర్నీ ఆఫ్ భగవద్గీత. इस भगवद्गीता के जर्नी में कितने एक्सपीरियंसेस, कितना सारे अनुभव अपन को फेस करना पड़ते हैं. एंड वी सी हाउ इट विल बी. भगवद्गीता हम बचपन से पढ़ रहे, लेकिन हर एक बार, हर एक टाइम, हर एक मोड़, हर एक घड़ी जिसने ये दुनिया को बनाया उसको सलाम. जिसने ये सुमधुर वर्ल्ड को बनाया उसको सलाम. जिसने प्यार को बनाया उसको सलाम. जिसने मोहब्बत को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उसको भी सलाम. जिसने इस भगवान के जो एपिक है भगवद गीता, भक्त प्रभुपादुल स्वामी, हिज होलीनेस भक्त वेदांत प्रभुपादुल स्वामी, उसको भी हमारा सलाम. जिस मोड़, जिस घड़ी, जिस वक्त ये भगवद गीता का पहला प्यार की खुशबू, पहला प्रिंट पब्लिश हुआ है, उस घड़ी को सलाम. उस वक्त जो भी है उन लोगों को सलाम. तो भगवद गीता में इतना कुछ क्या है. आप ये सवाल पूछिए, भगवद गीता में क्या नहीं है. भगवद गीता में वो बात क्यों नहीं है. भगवद गीता में उस बात को क्यों छुपाया. इतना बड़ा सुनहरा दुनिया में ये बात को क्यों छुपाया गया. भगवद गीता खुद एक दुनिया है. भगवद गीता itself is a world, and the person who brought it to us is Bhakta Vedanta Prabhupada Swami, the founder of ISKCON, the Krishna consciousness. लेकिन हम ये बात बोलते दावे के साथ, ISKCON पीपल अच्छा नहीं है. आप ये मतलब बहुत ही केयरफुल रहना ये बात में. गॉड इज नाइस, ही नेवर सेड आप खुद आपस में लड़ो. मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो पैसे कमाते हैं, ये जो छोटे मोटे आउटफिट्स हैं पैसे कमाते हैं, वो पैसों की लालच में सब मजहब सिखाता है आपस में वैर करना. क्योंकि जो पैसे हैं उसकी धुन में, उसकी एडिक्शन में, उसकी जो वीक पॉइंट में वो लोग बस उसमें ही, उस धुन में ही नाच रहे हैं. यू मस्ट बी नोइंग द फिल्म हरे राम हरे कृष्णा. देवानंद ने बहुत अच्छा बनाया एंड मोहतरमा जीनत अमन ने बहुत अच्छा काम किया. उसमें एक सेंटेंस है, कुड यू बी मोर पैशनेट. व्हाई नॉट. जब दुनिया ही पैशनेट बन गए हैं
सुप्रीम कोर्ट अपने ही वजूद, अपना ही बुनियाद भूल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद गलती करते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद गलत कदम उठाते हैं। दूसरों से क्या कहें? समथिंग लाइक स्मॉल स्क्विरल सेइंग श्री रामा, आप कोई प्रॉब्लम है तो श्री रामा बोलते, जब खुद श्री राम ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते तो मैं किसको, आई मीन टू whom I should say? One day I went to commissioner of Hyderabad. उस वक्त कमिश्नर ऑफ हैदराबाद रमणा मूर्ति पिठापुरम के लोग हैं। वो लोग गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के पिठापुरम के लोग। वो कमिश्नर का नाम रमणा मूर्ति। मैं उनसे ये सवाल करूँ, जब कमिश्नर ही गलत काम करते हैं, जब कमिश्नर ही पैसे लेके पैसों की लालच में इंसाफ को मार देते हैं, उड़ा देते हैं, गोली मारते हैं, हम किससे कहें? ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा गलत काम किया। एक आंख में खुशी देखने के लिए दूसरे आंख को मार दिया। आपको मालूम है मैं क्या कह रही हूँ? राम जन्मभूमि की लालच में, उसके एडिक्शन में सारे मुस्लिम भाइयों का नाक कटवा दिया। द हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द हेरिटेज ऑफ मुगल एम्पायर, जिसकी राज रानी आपको मालूम है जोधाबाई, जिसकी बहू मानबाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी इतने प्यार से मनाया है। उस मदन मोहन के जो एम्पायर है वो रूठ गए और चरित्र और इतिहास में उसकी बुनियाद रूठ गए। और कोविड आया, कोरोना आया, श्री राम नवमी नहीं कर पाए। जब से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इनजस्टिस किया, जब चीफ जस्टिस ही इनजस्टिस करते हैं, अनजस्टिस, अपन किसको बोले, किसको सुनाए, किसको मतलब शिकायत करे? अपन किससे शिकायत करें? टू whom we should complain? All these things makes my eyes to roll on. आप समझ रहे होंगे, झांसी की रानी रुद्रम्मा देवी, उसकी आंखों में आंसू। ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर चलते हैं, तारे और जमीन पे, ऑफ कोर्स आकाश जमीन हो जाते हैं, पल भर के लिए यहाँ रह जाते हैं, फिर वापस घर नहीं जाते। ऐसा दो दीवाने शहर में हिंदू मुस्लिम बाय 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 BYE बाय बाय। एक फिल्म है गीतांजलि, उसमें हीरोइन का नाम गीतांजलि है, नॉट रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, where Indira Gandhi got educated. In that particular film, welcome to Coffee to Arun, welcome to Chowdhury, welcome to Coffee with Chowdhury, because अभी 4-5 दोस्त आए हैं, नया न्यू बिलीवर्स, द न्यू बिलीवर्स को वेलकम सलाम।
बाद में ये नहीं कहना कि मैंने अनजान मारा। अनजान में बहुत कम मारते हम मारते ही नहीं तो एक गीतांजलि में हीरोइन कुछ तेलुगु फिल्म देखे हम। उस फिल्म जब रिलीज हुआ उस दिन हमारा बेटी का पहला बर्थडे है फर्स्ट बर्थडे ऑफ माय चाइल्ड। तो सेकेंड शो को गया, हमारे मम्मी डैडी आके बेटी को लेके गए, उसके घर में रहते, बर्थडे हो गया, हम और हमारे हस्बैंड सेकेंड शो को गए। इतना अच्छा ब्यूटीफुल फिल्म है गीतांजलि। उसमें हीरोइन उसके डैडी से पूछती, मुझे आज तक याद है, नाना నేను ఎందుకు చచ్చిపోవాలి, why I should die? Then father says, father is Vijay Kumar, Manjula's husband. I think Manjula is second wife to Vijay Kumar. Vijay Kumar says, beta, you are my pet. Like that Bhagwan has his own pets, God has his own pets. वो थोड़े लोगों को बहुत चाहते हैं दिल से, दिल और दिमाग से, जैसा हम आपको बहुत चाहते हैं। हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं, हमेशा आपके बातें सुनना चाहते हैं, हमेशा आपके चेहरा देखना चाहते हैं, हमेशा आपके पास रह के आपके ही प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। वैसा भगवान भी थोड़े लोगों को चाहते हैं, वो उसके ही प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उसके फेस देखना चाहते हैं। तो ही इज पिकिंग यू। आपको कैंसर आया इसीलिए कि God likes you. You think cancer is God and He likes you. He wants to take you as fast as He can. This is the reply He gave. शायद आप नहीं देखे होंगे completely, totally, fully. एक बार देखने की प्रयास कीजिए। जिसके पास उसकी डैडी है, लविंग डैडी, जिसके पास उसकी फादर है, डार्लिंग फादर, जिसकी जन्म एक अच्छे फादर से हुआ है, वो लोग ज़रूर देखना। यू विल नॉट डाउट मी। आफ्टर फिनिशिंग माई इशू विथ कॉफ़ी विथ चौधरी, I definitely want to take you to the journey of Bhagavad Gita, which is Srila Baladeva Vidya Bhushana, not Vidya, Sri Vidya, Sumitra, Prabha and all. It is dedicated to Srila Baladeva Vidya Bhushana, who presented so nicely the Govinda Bhashya commentary on Vedanta philosophy. अगर आप कुछ शक करते हैं हमारे बातों पर, ये प्रोग्राम देखने की प्रयास मत कीजिए। अगर आप मानते हैं हमारे बातें, तो ज़रूर ये प्रोग्राम देखने की, ये जो मतलब जर्नी ऑफ भगवद गीता, लाहिरी 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 लो ओहो जगमे ऊगेनुगा, ఓహో జగమే తూగెనుగా. సరే, జగమే ఊగింది, భక్తిలో బాగుంది, తూగడం ఏంటి? మత్తులో, శ్రీకృష్ణ వేదాంత మత్తులో, డ్రగ్ అడిక్షన్లో, హరే రామ హరే కృష్ణ సినిమాలో జీనతమ్మన్ లాగా అసలు భయంకరమైనటువంటి నగ్న సత్యం ఏంటంటే మత్తులో ఊగింది, డ్రగ్ అడిక్షన్లో, మత్తులో. నేటి యువత మత్తులో ఊగుతుంది. అరే आई एम सो सॉरी, आई केम टू तेलुगु बैक। हमारे हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग दोस्तों को बहुत मुश्किल होते हैं। आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू टू अंडरस्टैंड तेलुगु, एंड द तेलुगु आई स्पीक इज़ तेलंगाना मांडलिकम, मतलब एसेंट, तेलंगाना एक्सेंट में बहुत तेलुगु बोलते हैं हम। तो माई पेरेंट्स आर आंध्राइट्स। दिस इज़ द पर्सन। You understood? Bhakta Vedanta Swami. And
His Divine Grace A.C. Bhaktavedanta Swami Prabhupada, the founder, Acharya of ISKCON and greatest exponent of Krishna consciousness in the Western world. आपके यो मतलब दर्शन भी उन्होंने किया है और आप लोग भी उसकी दर्शन किया है. So observing the armies on the battlefield of Kurukshetra is chapter 1. Coming back to the present generation of youth who are becoming 99% drug addicts. Why like that? We should accuse the Chief Justice of Supreme Court. Not only the Chief Justice of Supreme Court, even the people who are supporting few things like दो lesbians के, दो gays के शादी हो सकते. Our companionship, it is such a crime. As far as my knowledge is concerned, companionship is crime. हमारे मतलब opinion में companionship is crime. I don't think it is a legal and official term. Though Supreme Court gave a permission, that companionship is more authentic than marriage. How can companionship be more authentic than marriage? Then what is marriage? Less authentic? Is it a foolish thing? Let me be very clear. Please give me a clear clarification. Don't confuse me. Companionship is more authentic than marriage. Okay. What about marriage? Is it less authentic? इसके लिए अपने माँ बाप इतने प्रयास करके मतलब they gave so much dowry, so many gifts for our marriage. They took so many pains. For what? Companionship की permission Supreme Court क्यों दिया? What made you to do that? You are misguiding the youth. You are misleading the youth. You are just making the youth to commit few mistakes. In their innocence, in their innocent age, people are committing mistakes because of your permission of companionship. मैं मानती हूँ Chief Justice of Supreme Court has a wild-natured wife, a wild-natured daughter who don't have any ethics and good character, who don't have any discipline and morals. Maybe they inspired him to give that permission of companionship. But our daughters, our बेटियाँ, हमारे बेटी बहुत अच्छे हैं, morals and ethics है, discipline है, good character है. Not like others betas who are characterless, who can stoop to any level for money. So, ఈ లాహిరిలో అనేటువంటి ప్రయాణంలో పదనిసలు సరిగమలు చాలా ఉన్నాయి. సానిదప మదరిసలు చాలా దొరుకుతాయి మీకు. సో ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మిస్టేక్స్. భగవద్గీతలో దేవుడు ఎన్ని చూపించాడంటే ఓహో జగమే ఊగెనుగా తూగెనుగా. ఎస్, ప్రపంచమంతా మత్తులో పడి తూగుతుంది ప్రపంచం. ఎందుకు? భగవద్గీత అనే మత్తు కాదు, లాహిరిలో. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒక జర్నీ, మనం బర్త్ టు డెత్, బిగినింగ్ టు ఎండ్, హాస్పిటల్లో పుట్టినప్పటి నుంచి మళ్ళీ హాస్పిటల్కే వెళ్ళి చచ్చిపోవడానికో, లేదా తల్లి ఊంబులోంచి బయటకు వచ్చినప్పటి నుంచి మళ్ళీ భూతల్లి యొక్క భూమిలో పాతి పెట్టబడడానికో, లేదా సిజేరియనో ఏదో అయ్యి హాస్పిటల్లోనో ఎక్కడో జన్మించి మళ్ళీ గ్రాండ్గా ఏ గ్రేవ్యార్డ్లోనో అంత్యక్రియలు జరిపించుకోవడానికో, ఈ ఒక ప్రయాణం అనేది మనిషి చేస్తూ ఉంటాడు పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా. అది అందుకే అంతిమయాత్ర రథములో భగవద్గీత పెడతారు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు చాలా చిలిపిగా చెప్పాడు, పుట్టింది చచ్చుటకే, చచ్చేది మళ్ళీ పుట్టుటకే అని. అంటే ఏంటి? నీది నాకేం అక్కర్లేదు, నీదేం నాకొద్దు, నువ్వు పుట్టావు చచ్చిపోయావు మళ్ళీ పుడదు, కానీ నీది నాకొద్దు, నీది నీకే ఉంచాను, నీది నీకే, ఇక్కడే. సో మై ఫ్రెండ్స్ who can't understand Telugu, you can enjoy this journey of Bhagavad Gita. One may be a devotee in a passive state, one may be a devotee in an active state, one may be a devotee as a friend, one may be a devotee as a parent, one may be a devotee as anything, student, teacher, or anything as a lover.
So, how Arjuna accepted this Bhagavad Gita? It should be noted, a point to be noted. Arjuna accepted Bhagavad Gita. His manner of acceptance you must see, you must watch and observe. His mannerism of acceptance. His manner of acceptance is given in the 10th chapter. And many things we can observe in Bhagavad Gita. And he says, "Oh my dear Krishna, you are the friend of the distressed and the source of creation. मसीहा मोहब्बत की मारों का है वैसा You are the master of the gopis and the lover of Radha Rani. I offer my all the respects to you. I offer my respects to Radha Rani also, who is the inspiration to you, and whose bodily complexion is like molten gold. आपने notice किया? Whose bodily complexion is like gold, and who is the queen of Vrindavan, Madhira Vrindavan. I think you are noting the points. And oh my dear Krishna, you are the daughter of, you are the king of Vrindavan, and you are very dear to everybody. So all these things, Krishna being a friend and cousin of Arjuna, he took all the special respect, special importance, special important role. So, though we are born in the darkest ignorance, our spiritual master opened our eyes. अपन एक अंधकार में पैदा होते हुए भी our spiritual master is always there to open our eyes, to show our light to us, to show light to us. I offer my respectful respects to him, who opened my eyes and shown light to me. So, first of all, let us pray to our God Sri Krishna and give respect to our parents, because without parents we are not here, and our first guru, first God is our parent, mother or father or both. If you are single parents, test tube babies ke parents. Some philosophers say that the manifestation of material nature is false. But according to the philosophy of Bhagavad Gita or according to the philosophy of Vaishnavas, this is not so. The manifestation of world is not accepted as false. It is accepted as real but temporary. It is likened unto a cloud which moves across the sky, or the coming of the rainy season which nourishes grains. As soon as the rainy season is over and as soon as the cloud goes away, all the crops which were nourished by the rain dry up. Similarly, this material manifestation takes place at a certain interval, stays for a while and then disappears. Such are the workings of Prakriti, but this cycle is working eternally. Therefore, Prakriti is eternal, it is not false. The Lord refers to this as my Prakriti, Prakriti Vikruti. Ante Lakshmi Narayanalu. The material nature is the separated energy of the Supreme Lord, and similarly the living entities are also the energy of the Supreme Lord, but they are not, separated. అర్థమైందా? వాళ్ళేమి విడిపోలే, వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. సో ఈ డిస్టర్బెన్స్ని మనం కనుక తట్టుకోగలిగితే, అగర్ अपन ये डिस्टर्बेंस को सह सकते, सह पाते, सह भी सकते, टॉलरेंट भी हो सकते. Like Priyanka Chopra, Miss World, she answered a question very beautifully. అదేంటంటే, men are very very violent, but women are tolerant. That's why women are great. देखेंगे कितना ग्रेट हो सकते, कितना मतलब सक्सेस को पा सकते. प्रकृति itself is constituted by three qualities. The mode of goodness. Three को, women is compared with nature, because women herself is Prakriti. The mode of goodness is the first quality among the three. The mode of passion
Can you be more passionate? Could you be more passionate? It is a woman who asked in Hare Rama Hare Krishna chanting, and a woman who has shown, Singataman shown her passionate worship and the mode of ignorance. इतना ignorant है वो, passionate भी है, ignorant भी है, good भी है, बहुत अच्छे भी है. So 1000 में मेरी बहना है इसीलिए अच्छे. Above 3 modes, above these modes, there is eternal time above all. ये सब बातों के above, ऊपर all these things, ये सब बातों के ऊपर में एक बात है, वो असली बात है. Above all these things there is eternal time, and by a combination of these modes of nature and under the control and purview of eternal time, there are activities which are called karma. You all know that, karma, 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 that karma. So let us give a small break. I think this is पहला कदम है. We take a small break, a small interval, and we will be back to you. Meanwhile, we will be refreshing ourselves. Thank you.